Assalamu alaikum, dear students. Welcome in Engineering Drawing and Graphics. I'm your instructor, Norez. Dear students, earlier we study and practice the single stroke lettering on graph paper, and our today practical number 3 is single stroke vertical lettering on a drawing sheet. So, dear students, for practicing the single stroke lettering on a drawing sheet, we need materials and equipment which are enlisted here. The number one, we need a drawing sheet. Number two, pencils like H and 3H pencils. Number three, self adhesive tape. Number four, eraser. Five, T scare. And the number six is set scare. So, dear students, for habitual rapid use in labeling and putting the notes on our drawings, a single line alphabet is required. This should be based on the shapes and proportions of the Gothic lettering. So, dear students, Gothic lettering word is used for a specific proportions of letters and alphabets. It may be divided into vertical and inclined single stroke letters. Usually, one type of letters are used in one sheet. At first, each letter has to be formed carefully and comparatively slowly to avoid distortion and wrong shapes. With practice, however, it is soon possible to letter quickly and accurately without conscious effort. So, dear students, today in this activity we will write the letters of different heights, like we will write the 10 mm height letters, alphabets, 8 mm height alphabet, sorry, I'm repeating this. Today we will later the alphabets of different heights like 10 mm, 8 mm, 5 mm, and 3 mm height. Okay, dear students, our today activity procedure is under here. Firstly, I explain it in English, and later on, I will explain that procedure in Urdu also for better understanding of our students. The first point in today practical is fix the drawing sheet on a drawing table with tape, keeping the T square at the left edge of border or table. So, dear students, our first point is you should have to fix the drawing sheet on a table with proper positions, that angles should be right, the sheet should be in a balance. And the second point is draw border lines with H pencil. Be careful, dear students, use H pencil, it's an important point. If you have not printed sheet with borders, uh, and dear students, we will look down in the next uh, the drawing sheet and a printed drawing sheet and its borders. And the third point is make the title at the lower base with the border line for writing your name, for writing your class, and for writing the drawing title. And the fourth and most important point is draw the guidelines with 3H pencil. Dear students, I'm repeating this, note down. uh, Whenever you are drawing the guidelines for alphabets or for lettering, use 3H pencil. Use the T square or set square for guidelines. And earlier we said that we letters the different alphabets at different heights. So the first point is here, three lines of 10 mm height, three lines of 8 mm height, four lines of 5 mm height, and five lines of 3 mm height. But be careful, and the most important sentence is having equal space of 8 mm apart for all letters for all heights. Okay, dear students. And the last point is letter alphabet in a single stroke Gothic as instructed by using H pencil. Dear students, for alphabets use the H pencil. Aziz Tulba,
अब इस सारी बात को मैं आपके लिए उर्दू में एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जो हमने प्रोसीजर पढ़ा उसके अंदर क्या है कि हम ड्राइंग शीट को देखेंगे और हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ड्राइंग शीट को किसी टेबल के ऊपर एक्यूरेट पोजीशन में बैलेंस में फिक्स कर देंगे टेप के साथ। एंड सेकेंडली हम एच पेंसिल को यूज़ करते हुए बॉर्डर्स ड्रा करेंगे अगर आपके पास प्रिंटेड शीट नहीं है। तो डी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर प्रिंटेड शीट को भी देख लेते हैं कि ये शीट आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इस शीट को आप लेंगे तो ये इसमें पहले से बॉर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये बॉर्डर चूँकि इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है तो बॉर्डर दोबारा से ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है बॉर्डर इसके ऊपर पहले से ड्रा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे शीट के ऊपर, ड्राइंग टाइटल यहाँ पर लिखा जाएगा स्पेस के अंदर, ड्रॉन बाय यहाँ पे ड्रा करने वाले का रोल नंबर आएगा, सिमिलरली उसकी क्लास, स्केल विच वी आर यूजिंग लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, here we are using the millimeter, date of performing that practical, and here is the name of your institute like Government College of Technology अटक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो शीट बनानी है वो शीट हमने बनानी है प्रोडक्शन एरिया के अंदर। तो ये बॉर्डर्स के अंदर जो एरिया है ये प्रोडक्शन एरिया कहलाता है, दैट इज अ प्रोडक्शन एरिया। So be careful dear students, be careful, always use the pencil inside that area। कि ये जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है इस प्रोडक्शन एरिया के अंदर हमेशा आपने पेंसिल से काम करना है। यहाँ पर आपने पेन का इस्तेमाल नहीं करना। पेन का इस्तेमाल आप स्केल लिखने के लिए, डेट लिखने के लिए, ड्रॉन बाय, क्लास, ड्राइंग टाइटल एंड ड्राइंग नंबर के लिए करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन एरिया के अंदर आप सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्शन एरिया है इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि 3 लाइंस 10 मिलीमीटर हाइट की लिखनी है, 3 लाइंस 8 मिलीमीटर की हाइट की, 4 लाइंस 5 मिलीमीटर की हाइट की और 5 लाइंस 3 मिलीमीटर की हाइट की। तो यहाँ पे एक स्केच दिखाया गया आपको समझाने के लिए कि अल्फ़ाबेट्स आपने कैसे लिखने हैं और इनकी हाइट आपने कैसे रखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट दैट एंड अंडरस्टैंड दैट पोजिशनिंग, whatever I'm saying, listen it carefully, note it down and then practice it। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ हाइट्स की, जैसे हमने बात की कि हमने जो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं वो मुख्तलिफ हाइट्स के होने चाहिए। फर्स्ट वन जैसे हमने कहा कि ये जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो है आपके पास, इसकी जो हाइट है वो 10 mm है, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट सिर्फ अल्फ़ाबेट ए ही आपने प्रैक्टिस करना है। ये अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड फिर आपने अल्फ़ाबेट ए, फिर अल्फ़ाबेट ए। ये जो आपके पास तीनों रोज़ हैं इनकी जो अल्फ़ाबेट की हाइट है वो 10 मिलीमीटर है। लेकिन बी केयरफुल कि ये जो दरमियान में स्पेस है जिसको येलो कलर में आपको दिखाया गया है, ये आपने इसको कलरिंग नहीं करनी, आपने इसको सिंपली लाइंस ड्रा करनी है। ये येलो कलर सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें कि ये दो लाइंस के, दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान फासला है ये 8 मिलीमीटर ही रहेगा। शीट के स्टार्ट से लेकर शीट के एंड तक जिस लाइन में अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ उसका फासला 8 मिलीमीटर ही रहेगा। 3 रोज़ पे आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट ए लिख दिया 10 मिलीमीटर हाइट का, उसके बाद नेक्स्ट जो 3 रोज़ आएंगी उनके अंदर आप अल्फ़ाबेट ए ही लिखेंगे लेकिन उसकी हाइट आप रखेंगे 8 मिलीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो 4 रोज़ हैं उन 4 रोज़ के अंदर आपने अल्फ़ाबेट लिखना है ए लेकिन उसकी हाइट आपने रखनी है 5। एंड लास्टली आपके पास जो आपने 5 रोज़ बनानी है और उन 5 रोज़ के अंदर 3 mm हाइट के अल्फ़ाबेट्स को आपने दर्ज कर देना है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द 10 mm हाइट 3 रोज़, सेकेंडली 3 rows of 8 mm height, and thirdly 4 rows of 5 mm height, and lastly 5 lines of 3 mm height। So dear students, that is our today practical, and be careful, here are some cares and safety precautions that you should have to follow between the practical, before the practical and after the practical। The first safety precaution or care is keep the white paper under your hands to get the work neat and clean। And the second point is use soft brush or handkerchief for dusting the drawing sheet, and the latter should touch the guidelines। अजीज तलबा, आपने जब शीट बनानी है तो आपने हाथ के नीचे जो आपके हाथ का हिस्सा शीट को टच कर रहा होगा वहाँ पर आपने वाइट पेपर हाथ के नीचे रख लेना है ताकि शीट की सतह
और लाइनिंग ख़राब ना हो। और अगर आपने शीट के ऊपर इरेज़र यूज़ किया है तो उसकी डस्टिंग करने के लिए कपड़ा या सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। और सबसे आखिरी पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, द लेटर शुड बी टच द गाइडलाइंस, की जो अल्फ़ाबेट्स आप ड्रा करेंगे वो गाइडलाइंस को टच करने चाहिए ताकि उसकी हाइट कंट्रोल रहे जिस हाइट को हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। Okay, dear students, and that's our today practical. Try it that, practice it that practical, practice the lettering, and submit your assignment within 3 days. तो अजीज़ तलबा, इस शीट को आपने प्रैक्टिस करना है, इसको ड्राइंग शीट के ऊपर आपने लेटरिंग मुकम्मल करनी है और लेटरिंग मुकम्मल करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। Okay, dear students, stay at your home, stay safe and keep learning. Thank you. Allah Hafiz.